Good evening, respected Shri Rashminbhai, guest of the honor, Sudarshanbhai, Kanubhai, all friends who have gathered here, who I have been seeing from quite some time on this philosophy study circle. And Bilal, there is a echo. Are you done? Today, Sudarshanbhai, who's a Gandhian himself and has had a very rich experience as a Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth, is speaking on a topic which is never irrelevant and would never be irrelevant in the civilization, not today, but even future. Every nation sees a birth of an individual who leaves an imprint on the sense of time in the society that he lives in. There are few blessed ones, I would say more blessed ones, who influence not only the society that they are born in, but the nation and the times that they live in. But then there are some who are the special messengers of God, who not only influence the times that they are born, the society and nation that they are born, but the entire world, entire generation, and not one generation, from generations to generation. It might look very simple as a surmise to this, but I'm quite sure each one of us has experienced where there are people you cannot expect to have known the philosophy and the standards that Gandhiji lived by, and actually adopting and getting influenced by it. I will just share one example to see how relevant is this. I was in China a couple of years back and I was talking to a Chinese friend. And I said, Yon Sun is his name, Yon Sun. How much do you know about India? And he says, Mihir, I was born in a Mao area, Mao arena, and all that I know about is Gandhi. I said, what do you know about Gandhi? He says that there's one thing which very profoundly influenced me, and that was his axiom. That was his principle of non-violence and fearlessness. And I was completely taken by surprise. And I said, why did it influence you? And he says that, look, I have seen thousands of people getting killed in my country. And because I was a privileged member of a, son of a party worker, all privileges I enjoyed. I was sent off to US. I studied there. But on my return, and I would hear news that there were thousands of people who were killed for no fault of theirs. And there was not even one person who could really rise against that violence. In these circumstances, if you compare it with India, it could have been similar. One person says that I don't believe in violence, but fights against the whole force
of the mighty power which ruled 2/3 of the world. There are people who sit in the armchair and says, oh, we don't believe in Gandhian philosophy. I mean, it was completely timid and irrelevant. Okay, it was good luck that it just passed off in the time. But these are armchair critics. Put yourself in a situation where one individual is fighting against the entire power which controls 2/3 of the world. He could have been afraid of his family getting killed. He could have been afraid of being deprived of his whatever resources that he had. He could have been, fearful of the torture that he could undergo. But in spite of that, one man fights without any vindictiveness, without any, I would say, in the mind carrying that torment that one day I'm going to take this revenge. And finally, he still wins. All these are the things. This was told to me by a Chinese man, which I never expected. And mind you, he's of the same age. So we are in the third generation after Gandhi. You can think what an imprint one person has left on the world. And we still find there are so many people in the West, they're giving up their things, they're coming here, they are staying in the colonies and ashrams to study Gandhian philosophy. This is the relevance of Gandhian. Experienced person to speak on this. So I would request Rashmin Bhai to introduce Shri Sudarshanbhai and then carry on the proceedings from there. Thank you. Thank you, Mihir Bhai. Sudarshanbhai retired as Vice Chancellor of Gujarat Vidyapith, which was established by Mahatma Gandhi. So he has lived Gandhiji's principles. Even today, even after retirement, he is a director of another Gandhian Research Institute at Jalgaon. So he continues after retirement also the same ethos. At Dharampur, he is the trustee of several trusts who are helping the poorest of the poor, which Gandhiji wanted that unto the last man of the society you should try and help. That is what he continues to do even at this age. We cannot find another person who would be better expert to talk on Gandhiji. Sudarshan Bhai, many thanks for accepting our invitation and Advait Vedanta. Subject is discussed by Rusi Munis, the highly spiritual people. And in my submission, at least for last 200 years, there have been no person greater than Mahatma Gandhi who understood philosophy and then practiced the philosophy. So he said that yes, a Gruhasth can also talk and practice Advait Vedanta. So we have selected this subject for the current discussion, and Sudarshan Bhai will, we all know about Gandhiji's independent struggle. So he's not going to talk about independent struggle. He is talking about the philosophies adopted by Gandhiji. Before I request Sudarshan Bhai to start, Kanu Bhai, shall you give a memento to Sudarshan Bhai? Sir. Oh, sorry. છેલ્લે મોમેન્ટ માથમ ના મળશે. એ સર હા, આપણે બધા જ ત્યાં જઈએ. ચાલો.
Good evening. It's really an honor to be here in this association's premise and speaking to a very enlightened audience. It's rare that Rashmin's buys push and shove that I am here. In fact, we have been discussing various things in philosophy group, and Gandhi comes up once in a while because I am like that fourth standard boy who had remembered an essay on coconut tree, and when he appeared in the exam, he found that he was asked to write on cow. So the boy was brave, so he started writing about cow. He said cow is a very useful animal. In this part of the world, we call it and we pray it as mother. And in my house, there is a cow, and my wife takes care of the cow. She tends it so well, and every evening she milks the cows. And the backyard of our house, there is a coconut tree, and she ties it to it. And the rest of the essay he wrote on coconut tree because he remembered. So be it any occasion, philosophy group or anything which is talking about anasakti or moksha, I put Gandhi as my coconut tree. So result of that is that I am here. So it's really wonderful. Meher bhai, and of course our senior most person, Kanu bhai, who has always been there to encourage on such occasions. Anyhow, this is a very short time, and obviously as a teacher I can complain that to explain Gandhian philosophy, one lecture is not enough. But if it is not, then why am I here? So I have to tell you something in the core that what was his effort, and I'll try that. Of course, we'll be open to question answers, further reading. And let me give the reading first, so that those of you who are really interested in understanding his philosophy, two very eminent persons who could produce the book when Gandhi was alive, and Gandhi had gone through that. It is called The Mind of the Mahatma by R.K. Prabhu and U.R. Rao. Rashmin bhai always announces soft copies available. So is the case. I can sort of send it if you're interested. The others is by Raghavan Iyer, another scholar who wrote and taught in US most of the time, the essential writings of the Mahatma. These are two very important documents from where we can learn about more about the philosophy and the depth of this person. The problem with this person has been that normally those who deal in philosophy and some of them have their own, the more spiritual people have their own realizations. Now here is a person who was in so much in this worldly affair that it is difficult to fathom the depth of this person by understanding only the physicalities of his presence and actions in politics. So you have to be really very careful in order to look for his philosophy. And at the core of the philosophy, we find out that this person essentially was engaged in self-development. As we all know, his quest for truth was his moksha. His quest was moksha.
And we really wonder that this is a strange person who appeared on this earth, who, by remaining in this world, we have such cases where we have had grahastas like Narsi Mehta and many Bhakti Marga people who were in this world, but they had almost practically even renounced as grahastas. They were useless people. But in the normal sense, I mean, even wife would not consult. That kind of characters. They were mast apne aap mein, they were in their own world. But here is a person whom the whole world wants to consult. From Viceroy onwards to a smaller person who wants to clean the toilet would come and ask Gandhi, "Main toilet kaise saaf karu?" And he will explain the finalities of how to keep the toilet clean. So this is something which is phenomenal, unprecedented to some extent. We can't say that for all the times, because whatever little we know, we can only say that. So from that angle, we will try to see in this short time. And before that, how has the world seen? If contemporary opinion is to be regarded, Gandhiji would be placed side by side with the greatest men of human history. While E.M. Forster believed that he was likely to be considered the greatest man of our century, Arnold Toynbee is convinced that he certainly is. Dr. J.H. Holmes offered a more concrete estimate when he described Gandhiji as the greatest Indian since Gautama the Buddha and the greatest man since Jesus Christ. In the hearts of the people, however, he is likely to be enshrined as the Mahatma, or more endearingly as Bapu, the father of the nation, who led to freedom through a bloodless revolution. Now, it is this kind of an esteem that the person had, and therefore, understanding Gandhi's philosophy is understanding Gandhi's life. We cannot really understand his philosophy without going through his life. So I still learn at this stage. Babalbhai Mehta was one of the Gandhians. So Narayan Desai, of course, was son of Mahadev Desai, and we Gujaratis very well know about him. So Narayan Desai once asked, "Babalbhai, आजकल शू वांचो छो? क्या पढ़ रहे हैं आजकल?" तो कहा, "Mangal Prabhat." Mangal Prabhat is a tiny book of some 30, 35, 40 pages. So obviously, Babal Bhai kind of a character would have read Mangal Prabhat. Narayan Bhai also knows that. So Narayan Bhai's next question is, "Ketla mi var?" How many times? 56 mi var. 56th time. So this is what I am trying to say, that understanding Mahatma, because I'll refer to Mangal Prabhat. Now, autobiography, experiments, my experiments with truth, those who know Gujarati should read it in Gujarati. And the same question applies to me. If somebody asks me, "Hu ketla mi var vanchu chu?" So I'm reading it nth time. Every time I take it, whenever I have to go to class, I'll again read it. And I now realize that every time I get some different meaning somewhere, because my vantage point with my age experience of the things look different to me, the same words, the same sentences, the same incidents gives me different interpretations. So to understand this person going through the life is extremely important. And therefore, we should really be starting with Mohan. And if you want to start with Mohan, that's his story is available to us, that what he did and how he did. And therefore, to understand Mohan is more important than understanding the philosophy, because by the time you start understanding Mohan, you know what the philosophy of the person is. At depth, that is the case. And that is how I'll be just brief in some sense, because otherwise we'll carry on and on. So I'll just say I had actually done it, and his autobiography, and I'll read it just for the sake of
I will read it in Hindi because everybody will not understand Gujarati, and whatever I have to read, that in Hindi we will be able to understand better. This is actually a preface to his Atma Katha. यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन वृत्तांत जैसी बन जाएगी, लेकिन अगर उसके हर पन्ने में मेरे प्रयोग ही प्रकट हों तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जनता के सामने रहे तो वो लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा यो समझिए कि वो मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में मेरे प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है, यही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी उसे जानती है। मेरी इसकी कीमत कम से कम है, मेरे राजनीतिक प्रयोगों की कीमत सब कम से कम है, और इसलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा को जो पद मिला है उसकी कीमत भी कम ही है। कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया है, मुझे तो ऐसा एक क्षण भी याद नहीं है, और इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूं, लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का जिन्हें मैं ही जान सकता हूं, रेफरेंस रश्मिन भाई, मैं ही जान सकता हूं, और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है, उसका वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं, इनसे तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी, प्रभुता न आवे। ज्यों-ज्यों मैं विचार करता जाता हूं, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूं, त्यों-त्यों अपनी अल्पता में स्पष्ट देख सकता हूं। मुझे जो करना है 30 वर्षों से जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हुए हूं, वो तो आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है। ये 50 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 50, ही इज ट्राइंग टू टेल अस दिस एज पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं, मेरा सब लेखन इसी दृष्टि से होता है, और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। लेकिन ठेठ से ही मेरा यह मत रहा है, जो एक के लिए संभव है वो सभी के लिए संभव है। इसीलिए मेरे प्रयोग कभी भी निजी नहीं हुए, खानगी नहीं हुए। उन्हें सब देख सकें तो मुझे नहीं लगता कि उससे उसकी आध्यात्मिकता कम होगी। शक्ति के परे की बात है। मेरे प्रयोगों में आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक, धर्म का अर्थ है नीति, आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति ही धर्म है। हो गया, ये फिलॉसफी आप समझ लीजिए। इसीलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, बालक, जवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भाव से निराभिमान रहकर लिख सकूं तो उसमें दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री मिलेगी। अब साइंटिस्ट, अध्यात्म और विज्ञान का संयोजन, लेट अस सी दिस। इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम पूर्वक, विचार पूर्वक और बारीकी से करता है, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नहीं मानता, अथवा
वे परिणाम सच्चे ही हैं, इस बारे में वह साशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है। अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं। वे सच हैं अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। हाँ, यह दावा मैं अवश्य कर सकता हूं कि मेरी दृष्टि से वो सच है। The small truth and the capital truth for Gandhi is extremely important, and that is how he changes his premise from truth, God is truth. From that premise, he changes from truth is God. He says truth is God, and this truth is capital T. And then he says that every mumuksha is actually is trying, and his quest is for the capital truth. And that truth is the realization. That realization is what is God. So, my truth is small t. Your truth is small t. So, till I am into my own small t with an openness that mine is a small t, and if I reach the capital T, which is such a farther thing, and everybody is trying to reach the capital T, then that capital T is the God. And all of us are traveling. So I don't say that my truth is the truth or the capital T. Now, this is his disposition with which he works. And then he has actually, we all know in what kind of fight he was involved from Dakshin Africa onwards. But this boy, in a family environment, is blessed with one thing. Now, otherwise, this boy is not anything that is koi extraordinary ladka nahi hai. Like we say, honhar birwan ke hot chikne paat ya putrana lakshan parnama, nothing of the kind. A very ordinary boy, but an extraordinary quality of his passion for truth from the very beginning. And from truth comes service. From truth comes his way to protest what he feels is not correct in his own way. So when he's being asked about he's questioned about his untruth, he's disturbed person. Now that is very relevant all through his life. So from childhood, once we all know that an English inspector came and he was giving dictation, and teacher told him that you better correct because मेरी इज्जत जा रही है, सभी बच्चों ने ठीक लिखा है, तूने गलत लिखा है. He doesn't do it, and he does not blame teacher for that. He says that I can't do anything wrong. I will not, because I can't do untruth. Very young person, he's in 8th standard, because English उस जमाने में 8 से पढ़ाई जाती थी. So, and many instances, and then comes his meat eating business. He stops eat, not because he has stopped caring about the country. In that age, we all felt, in our adolescent age, we said, हमारे को देश के लिए कुछ करना है. Somebody says, ये देश के लिए तू क्या करेगा, दुबला पतला दाल भात खाने वाला, मीट वीट खाओगे तो बड़े बनोगे, दौड़ोगे, देखो अंग्रेज कैसे हैं. So he starts eating meat under the impression. But then he gives it up and decides that when I become mature, old enough to take my own decisions, I will eat, but I will stop it now, because every evening when I consume meat, I have to come back and lie to my mother that I am not hungry. Listen, we all do it. बचपन में कितनी बार ऐसा हुआ, एक बार चाट खा लिए, पेट में जगह नहीं है, माँ कहती है चल खाने बैठ, भूख नहीं. We say भूख नहीं. This boy also did it, but he stopped eating meat. हम लोगों ने चाट खाना नहीं छोड़ा, पर गांधी ने मीट खाना छोड़ दिया. Now this is the resolve. So if you, in this way, I mean, I will be telegraphic, obviously, you just follow this person's life and you will find that there is a self-correction which has begun from the very beginning. This person evolves as a very strong moral character.
And therefore, his Swadharma becomes an extremely important person from him. And therefore, all his travel is actually a spiritual travel on working on the own persona, but in the public field. What is the crisis today? What is it that we are reading in the newspapers? Not at one place. Global condition, global position of leaders. You read about them. All kinds of scandals. MLAs, MPs. I was in the National Legislators Conference yesterday. About 2,000 MLAs had gathered. Great effort in Mumbai itself. And they were admitting very clearly, मुखिया पैसे खा जाता है, फलाना खा जाता है. मैंने कहा अपने बारे में भी कहो ना भाई. Why are you blaming मुखिया because you don't get your share? So, and somebody said that कि मुखिया में तो सबके शेयर है, हमारा ही नहीं है. So some people admit that. Anyhow, but this person is the character. In public life, character is so much important. And today the crisis is of character. And not only in political life. You take leadership in any walk of life and you will see that character is the problem. And Gandhi today is relevant, most relevant, because all his life from Mohan onwards, the growth of Mohan himself is character building. This is key. And in the back of that character building, the Dhruvatara is Satya. And that Satya ki khoj goes back to capital T as Mohan grows old, and that's a spiritual quest for the capital T. So it's completely a spiritual life in that sense and spiritual quest. And such a character, when appears on the stage of what's happening in real world, he is able to see, guide, and follow a different kind of a path which humanity has not seen. And in that, he comes up with this idea of Satyagraha. And J.B. Kriplani, when met first, J.B. Kriplani, bada history ka acha professor tha. He was big, teaching in Bihar, Muzaffarpur, and he heard about Gandhi. So for building non-violent society, you have to train Satyagrahi. And how Satyagrahi is trained? Satyagrahi is trained by living in the ashram and following certain vows that he produced out of his experience of life. Right? Now, interestingly, in Hind Swaraj, now, if we want to really understand his philosophy, there are again two books by Gandhi. This I have referred to. One is The Mind of Mahatma is Gandhi's thoughts only, but Raghavan Iyer is on Gandhi. So there is a commentary and then Gandhi both.
But Hind Swaraj, small, and Mangal Prabhat or letters from Yerwada, if you read English, these two small little documents tell us about his philosophy. One is about what is Swaraj and how it can be attained. And in that book where he says what is Swaraj, for him, Swaraj is not getting liberation from British. That's one of the objectives. That is one Swaraj. The real Swaraj is Khud par Rajya, Swarajya, regulation of the self. Now, this is where Gandhi departs fundamentally with the concept of liberty that evolved in the Western world. For the Western world, the constraints came from the society. So you are very happy, we all talk about it. In America, you can't drive like this. In UK, you can't drive like this. If you drive rash, if you are drunken, you do drunken driving, then you will be fined, your license will go away. What nice, nobody drives there like that. Yes. India में तो कितना खराब है, कांस्टेबल को 50 रुपया देके छूट जाओ, right? That's a different matter. But here, that's fine. But in the same place, I can kill myself by drinking, and nobody is supposed to come and interfere with me. My life is my life. Who are you to interfere? I have liberty. I have liberty to consume poison. You don't say anything. You can tell me. You can write nice. Likha hai. Cigarette smoking is injurious to health. Drinking too much is bad for your health. Your liver will go bad. And explain to him in detail how your liver will go bad. What will explain everything. Yes, then you are free. You can now drink to death. The choice of drinking to death is yours. But this is not our culture. So Gandhi departed. He said, our culture, what I have learned from our culture is that we have to regulate ourselves also. And I have to learn that I should not drink. Government need not tell me. I don't need red light and CCTV cameras to tell me that I am doing rash driving. But I am self-regulated to say that if I see a board that I can't speed more than 60, I don't. I am worried about a $200 fine, memorandum that comes to me, and therefore I am afraid. Otherwise, I'll speed for 120. That's not the point. Now, this point is underestimated by now, right now in our environment, because we are trying to consider the Western civilization to be the reference point for us where we have to reach. Because our concept of growth and development is now the same where the world has gone. Now, Hind Swaraj is both a critique and a provision of an alternative, where he says that your larger Swaraj depends upon the Swaraj of the individual. And therefore, his entire effort is constructive program through people who are satyagrahis. So they will have a sangharsh if somebody is not trying to move in that direction and is trying to oppress us. Therefore, you are going to offer protest. That is one part of the satyagrahi, and therefore you are telling your truth, and in a very non-violent way, but very firm way, you are protesting. Simultaneously, you are also working for a society which you want to build by your work. And your work is building that society, non-violent society, by a group of self-regulated individuals. Now, if we go back to our own culture, we are talking about what? We talk about Shadaripus. And Gandhi produces a nice counterpart. Kama, Krodha, Mada, Moha, Lobha, Matsar. We all know that these are our Shadaripus. And what is the best way of getting out? Sannyas le lo. Because if you are a Grahastha, to get rid of all these things is so difficult. And Mohan has gone through everything. Kama, in a real sense of that, the poor Mohan was married at the age of 13. क्लास में उसको कस्तूरबा याद आती थी, सोचता था कब शाम हो और मैं कस्तूरबा के पास पहुंच जाऊं. Real, he writes about it. I mean, they're so candid. He has admitted. He has passed through, and so much so that when his father is dying, बाप की सेवा करनी है, पिताजी की सेवा कर रहा है. बट रात होते ही उसका चाचा जैसे ही उसको रिलीव करने के आता है, दौड़ के बेडरूम पहुंच रहा है और सोई हुई कस्तूर को जगाता है. ऐसे उसने लिखा है, सोई हुई कस्तूर को उठाता है. And there is a knock on the door. नौकर आकर के कह रहा है कि बापू गया.
तुम्हारे पिताजी गुजर गए। उस समय उसको धक्का लगता है and he changes. That's the beginning of change. He takes brahmacharya vrat very much late in South Africa at the age of 39. But the boy, the teenager, is already highly disturbed about it. उस समय वो सुधर नहीं गया। तो क्रोध, दक्षिण, I mean I can give illustration of all कि गांधी किस तरह से, एक जिससे वो नहीं फंसा वो था मत्सर, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी। Now other than that, बाकी हर एक आदमी की तरह he was also suffering from kama krodha mada moha lobh. How do I counter it? He doesn't want to be a sannyasi. As I said, that he's in this world. And not only that he wants to improve upon, which he did all his life, he also wants to change people who can also build such a society. So there comes Ekadash Vrat. And this Ekadash Vrat is something I will speak and I will stop because otherwise we can go on. And then I will tell you how this impacted the whole people and why, in fact, when you really practice control over your kama, krodha, mada, moha, lobh, you really become a Mahatma. And if you are living in this world, if you are a sannyasi and if he goes to Himalaya, who bothers? गए, अरे ये तो जिंदा है, देख रहे हैं इसको रोज, he is leading our political struggle and still he is such a kind of person. And therefore he becomes father of the nation and Mahatma because he does everything by living. कस्तूरबा को चोर डिक्लेयर कर देता है. Somebody came, some relative came, और अपने गुजरातियों में जैसे होता है, बाळको માટે कहीं पी गया. And Kasturba, being a poor lady, a householder also, decides that she should keep that money બાળકો માટે કંઈક લઈ આવીશ. This is happening in Sabarmati ashram. And Bapu comes to know about it. And after the evening prayer declares, આજે આપણી વચ્ચે ચોર છે. आज हमारे बीच कोई चोर है. Everybody is wondering who is this चोर. And Gandhi declares, કસ્તુરબા ચોર છે. એને નિજી ભેટ સ્વીકારી છે. એને આશ્રમમાં જમા નથી કરાવી. Now, he, to this extent, he comes out. And abhi nahi hai wo zamana abhi nahi hai. But believe me, when they were living like that, what kind of messages it was? पहला एक तो ये होगा कि इस बुड्ढे के साथ नहीं रहना चाहिए, खतरनाक है. But he also gave this message that this fellow is so different. He's so tall to all of us that he even does not tolerate that his wife, and she, I mean, both Ba and Bapu are revered. They are the chief. And he doesn't even spare his wife. He doesn't spare himself. He sits on upvas if something happens to him. And if somebody does wrong, he sits on upvas. Now, therefore, this character's, his esteem goes really high. That's out of his own behavior and for the self-regulation that he practices. So he said that if you want to, then ashram women wrote to him. He was in Yerwada jail. So every Tuesday he wrote a letter. And out of that, every day he wrote about Satya, Ahimsa. Now Satya, now this I call that this is the tapasya of the graha. What is the tapas? Gandhi's tapas for every individual who are in this world is this tapas that you follow this Ekadash Vrat. 7 are for the individual and 4 are for the social. A very insightful baniya, I must say. Never spares the society at any point. And I have argued in a different way. I mean, this is not an occasion to say, but I have argued that उसको क्यों बना रहे हो संत? Because भाई संत हम लोग छूट जाते हैं. भाई महात्मा आदमी था, जय हो जय हो. हाँ, तो we want to sort of, हम लोग छूट जाना चाहते हैं. But if you consider him a baniya, he's a very, very, very chust baniya who, for the least cost, wants to get the maximum return, which is sustainable to life ever. That is the kind of thing that he had, and he offers Satya, Ahimsa, Brahmacharya, Aste, Aswad. You know that these are yam niyamas. आपकी आत्मा के कल्याण के लिए ये करने की जरूरत हर एक कह रहा है. So these are yam niyamas. What is Gandhi's addition? Gandhi's addition to this are 2 more. He says Abhaya. Abhaya. What is Abhaya?
Abhaya is na darunga na daraunga. Huh? So abhaya can also be खबरदार अगर कुछ किया तो भाईगिरी करूंगा. That's also abhaya. डराऊंगा भी नहीं. That is abhaya. So I am not afraid and I will not threaten. Very important message. What will happen by this? Without abhaya, you can't practice satya. You require tremendous amount of nirbhayata. सत्य के आचरण के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है. अपने आप से नहीं डरोगे और लोगों से नहीं डरोगे. So what is this? This is an auxiliary vrat necessary to strengthen the practice of the vrat of the satya. Aswada. What is aswada? Aswada is for the brahmacharya. And what is brahmacharya? Brahmacharya is sanyam. Brahmacharya is not only abstain from sex. Brahmacharya in living life is having control over all your senses, which again controls the kama, krodha, madh, moh, lobh. Because एक के बाद वो साहब हमको सुनाते हैं रश्मिन भाई दूसरे अध्याय का श्लोक कि क्राम से क्रोध जन्मता है और पूरा विनाश होता है. वो तो हमको सर ने अच्छी तरह समझा दिया. तो ये जो षड रिपु हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन कितना जरूरी है, उसमें एक्सेसेस हुई. समय नहीं है, छोटी सी एक बात फिर भी कर दूं क्योंकि दृष्टांतों के सहारे हम जल्दी भी अंडरस्टैंड क्विकली. प्रभा देवी, जयप्रकाश नारायण's wife, and see that the tall personalities in his times. प्रभा देवी ने जो है, प्रभा देवी is ब्रजकिशोर बाबू's daughter from Bihar. बड़ा वकील था जो चंपारण सत्याग्रह के अंदर who comes in the picture and then he becomes Gandhian, Rajendra Babu, Brajkishore Babu and all these people. Brajkishore's daughter is Prabha Devi and Prabha is married to Jayaprakash Narayan. Prabha Devi accepts, comes to Sabarmati Ashram. Jayaprakash Babu America पढ़ने गए हुए हैं. And Prabha Devi, this old man catches hold of everybody. तुमको व्रत लेना चाहिए ब्रह्मचर्य का. So poor lady, poor girl took it. तो हो गई. Then Jayaprakash came back and he came to Bapu and really fought with him. Bapu, what right you have? If Prabha has to take brahmacharya vrat, you should have consulted me. I am husband and this is decision of husband and wife. Do you agree? Bapu said, yes, I agree. You have made a mistake? Bapu said, yes, I have made a mistake. Both of you can now resume grahastha ashram. And Jayaprakash says कि मैं अपनी पत्नी प्रभा से बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए हुए निर्णय को मैं उसको वापस लेने के लिए क्यों कहूंगा. Prabhavati and Jayaprakash remained brahmacharya and we know it's public matter, they didn't have any child. Now I am only saying that these are only side things, but see the impact that this has created in the lives. So aswada, actually aswada is not only in palate. उसके लिए एक मथुरादास त्रिकम जी को 1921 में एक चिट्ठी लिखी थी. समय नहीं है, नहीं तो पढ़ना मजा आता. पर उसमें वो लिखता है कि तुम ये क्यों समझते हो कि मेरी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है. There may be an element of egoism in my article or conduct without being aware of it. मथुरादास त्रिकम उसका रलियात बेन का लड़का, उसका भतीजा है, भांजा है. उनके बीच में तो आपले होती रहती. He was also looking after the ashram. So किसी चिट्ठी में जो है मथुरादास त्रिकम ने उनको लिखा तो ये उसका जवाब दे रहे हैं. उनका ओरिजिनल लेटर हमारे पास नहीं है पर वो ऐसा कुछ लिखा होगा. There may be an element of egoism in my article or conduct without being aware of it. The word klesha here should be interpreted in a different logic will not avail when one is describing the conditions of one's mind. I have given a graphic description of my feelings.
It may be that these feelings were not quite pure. However, my state of mind at the time of writing the article had also in it a yearning for moksha. My aspiration for moksha was by no means weak, but the fact is that I am no more than an aspirant after moksha, but I am not yet fit for moksha in this life. My tapascharya is not intense enough. I cannot control my passions, no doubt. I have not yet become completely free from them. I can control the palate. अब अस्वाद पे आ रहा है. I can control the palate, but the tongue has not yet ceased relishing good food. मैं खाना तो कम खाता हूं. कहां उन्होंने तय किया? हरिद्वार में मेला देखने के लिए गए थे. कुंभ मेले में दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे और हरिद्वार के कुंभ मेले में एक भी अखाड़ा नहीं छोड़ा. साधुओं के प्रति बड़ी इज्जत. He visited every अखाड़ा and then he was disappointed. जिस साधु जमात के लिए उनकी इज्जत थी, उनके हाल हवाल देख करके, बहुत लिखा नहीं उनके बारे में, पर स्वामी आनंद ने लिखा है. उन्होंने लिखा है मारा पितराइयो. जिनको गुजराती आती है उनको स्वामी आनंद का मारा पितराइयो पढ़ लेना चाहिए. साधु समाज के बारे में बहुत अच्छा लिखा है. खैर, तो वो उनको पता था. देन ही टुक ए वाव और लिख रहे हैं कि आई कैनॉट कंट्रोल द पैलेट but the can control the palate, but the tongue has not yet ceased relishing food. He who can restrain the senses is a man of self-control, but the man whose senses have become through constant practice incapable of enjoying their objects has transcended self-control, has in fact attained moksha. आप इतना ही नहीं, आपको ट्रांसेंड करना है कि आप अनासक्त हैं. क्या खा रहे हैं इससे क्वांटिटी आप कंट्रोल कर रहे हैं. गांधी ने उस समय व्रत लिया कि वो सिर्फ 5 चीज खाएंगे, तो उनके प्लेट में नमक भी आ जाती थी तो 5वां हो जाता था. सो ही प्रैक्टिस्ड इट ऑल हिज लाइफ, येट ही इज राइटिंग दिस. 6 साल के बाद ये आदमी लिख रहा है कि आई स्टिल रिलिश फूड. खाना अच्छा लगता है. एक बार जो है वो हमारा क्या बनाते हैं हम लोग, मग अने खीर नहीं, આપણે શું કહેવાય બીજું नहीं, खीर बीजू बने છે ને આપણું दूध पाक. सो एक बार भाई साहब मग और बहुत अच्छा बना था, बाने बना दिया होगा, ज्यादा खा गए, नडियाद गए, उसको तकलीफ हो गई. ही वाज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड. सबको बुला लिया, पत्र लिया, इतने गंभीर हो गए थे, डिसेंट्री हो गई उनको. सो अस्वाद व्रत की प्रैक्टिस में भैया अभी भी हमको दूध पाक अच्छा लगता था, मग अच्छा लगता था, कम खाते थे पर खा लिया उस दिन. तो अस्वाद का व्रत जो है बड़ा मुश्किल है. Anyhow, you will therefore notice many defects in my language. For me, now this is important, and sir, this answers your question. You had very pointedly asked. You will therefore notice many defects in my language. For me, even effort for attaining Swaraj is a part of effort for moksha. Writing this letter to you is also part of the same effort. If I find hindrance in the path of moksha, my pen would drop down this very moment. Such is my yearning for moksha. Nevertheless, the mind is like a drunken monkey. Mere effort is not enough for controlling it. Our past actions also must be coming in our way. In my article, Optimism, I have suggested a rule to conduct that we should cease to have any dealings with a person who breaks a promise. This is a sign of a detached person. Even if next year I find that the atmosphere in India is unfavorable, politics की बात कर रहा है. Next year ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब विड्रॉ किया था उसकी बात हो रही है. लोग अहिंसक नहीं हुए हैं, चौरी चौरा के बाद आंदोलन पीछे खींचता है. लोगों ने कहा यू आर कमिटिंग पॉलिटिकल हराकिरी, लोहा गर्म है, ठोक दो, अभी हमको आजादी संपूर्ण मिल जाएगी. गांधी कहता है वापस ले लो. ये उसका बैकग्राउंड है इस आदमी का.
Therefore, I am saying for him, his life, his that moksha's effort of moksha is also the prayatna. वो prayatna, rajkaran का prayatna भी उसका मोक्ष है. This is sign of a detached person. If even next year I find that the atmosphere in India is unfavorable and still go on harping the same tune, it would be an outrage. In that case, I must first been considered as the best speech. इससे पता चलता है कि भैया ये भी एक ऑक्सिलरी है संयम के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए. और बाद में जो है वो ही इंट्रोड्यूसेस सोशल नॉर्म. 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए. बाकी के 4 जो है वेरी ब्रीफली, शरीर श्रम, बॉडीली लेबर फॉर योर लिविंग. शरीर के बिना, श्रम के बिना खाओगे. ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट, दिस ही गॉट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी. ब्रेड लेबर, you should work physical work for earning your bread. इस पे अब सब कंट्रोवर्सी हुई, शरीर श्रम, बुद्धि श्रम, श्रम जरूरी है, फिर ये सब हुआ, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी. देन स्वदेशी in a very larger concept. It will take time for me to explain. स्वदेशी पण do believe that he says that पड़ोसी का ध्यान रखो, दुनिया का ध्यान बाद में अपने आप हो जाएगा. अपने पड़ोसी का पैदा हुआ अन्न खाओगे, उसका बनाया हुआ कपड़ा पहनोगे, और हम सब साथ मिलके घर बनाएंगे. रोटी कपड़ा और मकान के बारे में स्वदेशी की बात करता है. वो ये नहीं कह रहा है कि भाई इंपोर्ट बंद कर दो, एक्सपोर्ट बंद कर दो. बेवकूफ तो है नहीं, बनिया है. पर वो कह रहा है फॉर बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, सेल्फ रिलायंस इज नेसेसरी एट वॉट एवर लेवल यू वांट टू अचीव. उसको फिर हमारे सर्वोदयवादियों ने उसको जरा बता क्लिष्ट कर दिया, कहा कि अपने गांव का, अपने लेवल का, घर का सब कर दिया. कोई जरूरत नहीं. ही इज टॉकिंग अबाउट कि रीजनेबल पड़ोस में एक दूसरे के एक्सचेंज में बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज खत्म कर दो, ताकि अगर कोई दूसरा बिपोर जॉय आ गया और अगर कोई शिप में डूब गया ऑस्ट्रेलिया से आने वाला गेहूं का, तो यहां लोग भूखे मर जाएंगे. एंड दिस इज नॉट अनफोर्सीन, दिस कैन हैपन. वी आर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग सो मेनी थिंग्स that somebody will die if we are not sending our rice, and we will die if somebody is not going to send us wheat. So this makes sense, eminent sense even today. So Swadeshi. The last two, of course, are Asprishata Nivaran and Sarvadharma Sambhav. And Asprishata Nivaran, he will never forgive the Hindu Dharma for that. He took on all acharyas, all shastris on this. He says this is a kalank, and I don't have to say more on this. We are all enlightened people. Sarvadharma Sambhav comes at a very different tangential point. He says Dharma is, religion is founded by human beings. Human beings are imperfect because everybody has a small truth. अब किसी के पास कैपिटल ट्रूथ नहीं है, टी नहीं है, क्योंकि वो आ गया तो भगवान है. So if everybody is small truth, then the chances are that there is falsehood or there is weakness in it is going to be there. So how do you resolve? You start तलवार खींचोगे कि तेरा सिर काट दूंगा, खुदाई है, ईश्वर नहीं है, बोल खुदा है कि नहीं, मुसलमान बन जा मार दूंगा, या हिंदू कहेगा राम बोल नहीं तो खत्म कर दूंगा. नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल ट्रूथ है. क्या हो सकता है? सर्वधर्म संभाव, सबको प्रेम से देखो. तेरी भी गलती है, मेरी गलती है, तू अपना पालन कर, मैं अपना पालन करता हूं. तू तेरी यात्रा कर, मैं मेरी यात्रा करता हूं. तू हज पे जा, मैं कैलाश मानसरोवर जाता हूं. पर स्टेट को सब्सिडी कहीं भी नहीं देनी चाहिए. दैट्स वेरी क्लियर. Gandhi is also clear. No subsidy from the state. Nonsense. State is secular. ठीक है? So that's how. So this, for a grahastha and for the society, he is giving these 11 vows and saying that by a grahastha practicing these 11 vows, at least the 7 of them to begin with, you will actually be able to win over the Shadaripu. And as you travel on this path, if you are continuous, because it's a continuous journey for all of us. So if we continue to try to control over our Shadripus, if we are able to sort of win over them, in the process of it, you will build a society which is much more livable. So you require less of state. See, this is a very important point. He's an anarchist. वो स्टेट को खत्म कर देना चाहता है. और आप देखिए आज की परिस्थिति में, द स्टेट इज पावरफुल, द बिजनेस इज पावरफुल. अभी मैं रश्मि भाई से कह रहा था, ये वेलफेयर स्कीम की जब बात हो रही थी, मैंने कहा अच्छा आप समझ रहे हो, आप दे रहे हो,
हाँ, वो कहते हैं हम लोग कितनी सारी लोगों के लिए हमने वेलफेयर स्कीम, मेरी सरकार ने ये चलाया, मेरी सरकार। अरे तुम क्या दे रहे हो? हु आर यू टू गिव? है कि नहीं? सो द पावरफुल स्टेट एंड which really claims power out of that is trying to give what? Is trying to spoil the population's pride, individual pride, swabhiman, and you are giving them doles. And what is corporate doing? एक पाप विमोचन राज्य कर रहा है अपने सत्ता के मद में, और कॉर्पोरेट अपने बिजनेस के मद में CSR करके पाप विमोचन कर रहा है कि नहीं? जरा सोच के देखिएगा। गांधी से इसकी जरूरत क्या है? Decentralize power, decentralized production systems. In that, you are going to reduce automatically in the system violence. If you go deeper, the state and the business both together in nexus, positive or unholy nexus, they really unleash structural violence to a large scale, affecting every individual in the society. And this is what we are seeing with the you don't have to be a spiritual person, rationally भी आप so this is what the old man tried all his life by living. That's the best part of it. And he said, last incidents, दांडी सत्याग्रह की बात चली और इनको सौंपा गया था पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया और बाद में गांधी को सौंपा कि बुजुर्ग आदमी है, ये सीनियर है हमारे, भले एंड उन्होंने लिखा वाइसरॉय को 1 2 3 4 ऑल अवेलेबल डॉक्यूमेंटेड दैट दीज आर द पॉइंट्स दैट salt is सत्याग्रह। एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, कांग्रेस में भी सबको, और बुजुर्ग कांग्रेसी मोतीलाल नेहरू वगैरह तो बोले क्या बेवकूफ बुढ़ा सठिया गया है, 60 के तो हो रहे थे 29 में, बोला बुढ़ा सठिया गया है। खुद ही बुढ़े थे पर फिर भी होशियार तो थे मोतीलाल। 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी, कहा कि व्हाट इज दिस, we thought that you are a wise man and you will devise some strategy and nice things for us, and you have come up with this breaking the salt law. So Bapu replied, postcard मंगाया, address to मोतीलाल, आनंद भवन वगैरह वगैरह इलाहाबाद, 1 sentence, करके देखो। And he received the letter. मोतीलाल, अब मोतीलाल was modest enough to realize कि अगर बुड्ढा कुछ कह रहा है तो दम होगा तो ही कहेगा। So he announced, वो तो बड़ा आदमी था इलाहाबाद के अंदर, तो पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया कि कल सुबह 9 बजे जो है मैं इलाहाबाद के फलाने चौराहे पर जाकर के नमक कानून का भंग करूंगा। उस समय करते ये थे कि नमक ले जाते थे, उसका घोल बनाते थे, उसको स्टोव पे चढ़ा देते थे तो पानी उड़ जाता था, तो नमक बन जाता था और लेके घर पे। उस समय वो नमक 5-5 रुपए 1 ग्राम बिका है। See the whole the environment. मोतीलाल केम आउट, क्या है मामला? सर आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? आप नमक कानून का भंग करने वाले हैं, खतरा है शांति को, पब्लिक शांति को खतरा है। तो कहा अच्छा मुझे थोड़ा समय दो, मैं 10 मिनट ले लूं। तो कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, आप तो जो समय चाहिए ले लेते हैं। एक पोस्टकार्ड मंगाया, बापू का आश्रम का एड्रेस लिखा और उसमें एक वाक्य लिखा, करने से पहले देख लिया। तो ये एक जो ताकत है, तो ये ताकत जो है इस आदमी में थी, और इसीलिए ये आदमी कभी भी वैसे इररिलेवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम गलत चीज को पकड़ रहे हैं। हम तंत्र को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई तंत्र में तो तंत्र बदलता रहता है। तत्व की बात करो, क्या ये षड्रिपु हर एक संसार में नहीं होने वाले? आने वाले 1000 सालों में षड्रिपु नहीं होंगे? अगर होंगे और इन षड्रिपु से लड़ना है और गृहस्थ भी होना है,
तो इस बुढ़े ने जो मार्ग बताया था गलत क्या था? कोशिश तो कर सकते हैं। तो इस ऑनेस्ट कोशिश को भी हम क्यों दगा दे रहे हैं कि ये नहीं हो सकता? दैट इज द क्वेश्चन मार्क दैट आई हैव एंड आई लीव इट विथ यू. And you have to take Gandhi like this to the younger people. That was your second point. See, you have to explain to them that आजादी दिलाई, फलाना किया, भगत सिंह को नहीं मारा, उसको छोड़ा, 55 करोड़ रुपए दिया. अरे यार बहुत गलतियां की, आदमी था, कहीं सच्चा भी होगा, कहीं गलतियां भी की, कहीं पॉलिटिकली आप उसको उछाल रहे हो, छोड़ दो ना. कर ली भाई, कर ली, क्या कर लेगा? पर उसने ये भी तो किया, अपना चरित्र बढ़ाया कि नहीं? कौन, मुझे बताइए कि 24 साल का एक लड़का, युवा आदमी है, 1 साल हो गया उसको अफ्रीका में. कैन यू बिलीव ए लॉयर who can young person who can arbitrate between a 40,000 pound issue on arbitration? 7 साल से दोनों जगह के बैरिस्टर लड़ रहे थे. 1 साल के अंदर इस आदमी ने दादा अब्दुल्ला और तैयब सेठ को दोनों को समझाया, फंस जाओगे, ये अंग्रेज वकील तुम्हारा पैसा ले लेंगे, बैठो बाहर. एंड कन्विंस्ड. आर्बिट्रेशन हुआ. जो सालों से केस का निकाल नहीं हो रहा था, ये 24 साल के लड़के ने 1 साल के अंदर आर्बिट्रेशन में दोनों सेठों को बिठा करके मामला सॉल्व कर दिया. यार कोई लीगल जीनियस ये भी तो था. बच्चे को ये तो बताओ, ही वॉज वेयरिंग 3-piece सूट, फकीर थोड़ी था तब. और जब उसको कहा बापू रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद तो सारी कहानी चली, लोगों ने कहा कि तुम्हारा वोटिंग राइट्स जाने वाले हैं, किसी को पता नहीं. बोला गांधी भाई हम तो बिजनेस वाले हैं, हमको क्या पता चले, हम तो पढ़ते लिखते भी नहीं है, बोलो क्या करें, तुम यहाँ रुक जाओ. तो कहाँ रुक जाता हूँ, पर मेरे खर्चे का क्या होगा? बोला दादा अब्दुल्ला सेठ तो बैठे हैं. बोला दादा अब्दुल्ला सेठ ने तो मेरे को अपने काम के लिए पैसे दिए. तो कहा चिंता मत करो, हम सब बैठे हैं ना. बोला नहीं, आई कैनॉट एक्सेप्ट एनी money for the public work that I do for my survival. 24-year young man was saying, no compromise. He said, मेरा खर्चा 300 पाउंड सालाना है. अरे 300 पाउंड बड़ी बात नहीं है, दे देंगे. No, I can't accept for public work. Public work is in the voluntary spirit. I will do that. उसका जो खर्च होगा वो तो हम लोग सब मिलके करेंगे. 20 व्यापारी लोगों ने कहा कि हम 15-15 पाउंड की रिटेनरशिप देते हैं तुमको और हमारे केस तुम लड़ना. एग्रीड. बैरिस्टर गांधी की 5,000 पाउंड की प्रैक्टिस थी सालाना. सबसे साहूकार एनआरआई होता वो. See, we really don't know where this man came from and what all he did in his life. हमको सिर्फ वो फकीर बुड्ढा दिखता है जो भाषण देता रहता है और लोगों को खाने पीने से रोकता है, ब्रह्मचर्य का पालन करवाता है. But you don't know what the way he has traveled for his character. That is the depth of the person. And take this to young people. I'm sure Ritvik, this appeals to you. Girish, it appeals to you. Yes, it does. So you have to tell this story to people. That's how you will reach. Finally, about Kasturba, only one sentence. The lady suffered, but the lady was also very strong. That we must admit. And she knew that she is dealing with a person who is very tall. And for Mahadev Desai, Narayan Desai in Gujarati has written a book which is a very appropriate title, Agni Kundama Ugilu Gulab. So anybody who lived with Gandhi, if they had to blossom, it has to be in an Agni Kund. That's the thing. So Kasturba suffered, yes, she suffered, but she was proud of it. So our women feminists who rise, they must now realize that it is completely a different paradigm. So it just cannot be compared with that way, a feminist argument that women and men are equal. She was equal. Gandhi equality की एक level पे बात कर ही रहा था. He brought women out. कितनी औरतों को घर से बाहर निकाला उसने? Numberless. So, very strong person. I think I should stop here. I have exceeded 5 more minutes. Sudarshanbhai said about Kasturba Gandhi, people should realize that
Kasturba ji was proud of being Gandhiji's wife, and there are stories about it. So when a feminist says that she suffered because of Gandhiji, she did not believe initially in Gandhiji's principles and all that. For today, from Bombay Chartered Accountants Society, as a memento, we are giving this unabridged version of Ramayana to the speakers today. Okay. There is an incident which Ram Bhagwan tells Sita, who was at that time pregnant, to go to the forest. फॉरेस्ट, जंगल में चली जाओ. सीता का त्याग किया उन्होंने. ठीक है. अच्छा, अभी कितना अन्याय लगता है. सबको अन्याय लगता है कि ऐसा कैसे. वो एक धोबी ने बोल दिया तो क्या सीता का क्या कसूर था. ये रामायण पढ़ो. मैं तो सबको बोलता हूँ रामायण पढ़ो. उसमें जब लक्ष्मण जी सीता को वनवास में छोड़ने जाते हैं, सीता ने एक शब्द टीका नहीं की है. सीता रोती है कि मेरे बगैर राम कैसे जिएंगे. सी द हाइट ऑफ लव. उनको कोई फरियाद नहीं है. वो समझती है राम ने क्यों त्याग किया है. उनको ये हद तक पहुंचने के लिए बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल चाहिए, जो कस्तूरबा ने प्राप्त किया था और जो सीता जी ने प्राप्त किया था. तो ये आपकी जो बात कर रहे थे वो मैं जस्ट सपोर्ट कर रहा हूँ. वंडरफुल पॉइंट. आप कुछ पूछ रहे थे. Dr. Iyengar, in these modern times, how would one practice Gandhian principles? That is the first question. And second is, yes, we all revere Mahatma Gandhi. He is considered as the father of the nation. But why would someone, I'm not a student of history, so I don't know history much about why he killed him, but why would someone kill a person like Mahatma Gandhi, who was considered as a father of the nation? Well, I think the people who actually live very intensely and start practicing life, they become unbearable to others. This is very well known. Is your answer to the second question? That's right. The answer to the first question. No, the first question is exactly. No, this, see, we all practice in our lives. We are not conscious about it. We have our own values. Don't we have? See, there are non-negotiables to us. Now, the only thing is that how do you increase your non-negotiables? We try to see, there are two things that we do. One is that each of us, for various backgrounds, we all have our non-negotiables on which we don't compromise. Those are our values. However, there are second rung of values on which we do trade-off. Unfortunately, I mean, हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर डालते हैं, तो हमारे ट्रेड ऑफ में तो यही होता है. अरे भाई कितने झाड़ कटेंगे. अच्छा सर ये जंगल कट रहा है, 3 जंगल और उगा दो. ट्रेड ऑफ हो गया. ठीक है. अच्छा एक जंगल कट रहा है, उसके सामने कितने आदिवासी रीसेटल हो रहे हैं एक जंगल को. स्पीशी के जीने में, जिसमें हम आत्मा बुद्धि मन बुद्धि चित्त का आवाज समझते हैं, उसके लिए ये काल निरपेक्ष है और हमको हमेशा आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मशोधन करते रहना चाहिए. जहां तक हम ऐसा करेंगे तो जो नॉन नेगोशिएबल रहना चाहिए उसको हम ट्रेड ऑफ की कैटेगरी में नहीं डालेंगे. सच मुश्किल है. अभी मैं इनको कह रहा था, एक शायर ने कहा
कि सच बढ़ जाए या घट जाए तो फिर सच नहीं रहता, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं है। तो ये है इसका पॉसिबल जवाब आपके पहले सवाल का। और ये कोई कठिन नहीं है भाई, हम सब करते हैं प्रैक्टिस अपने अपने लेवल पे, सब कहते हैं, नहीं कहते ये इसका दिमाग खराब है यार, इसके पास मत जाओ, ये काम नहीं होगा तुम्हारा, नहीं करेगा वो। व्हाट इज दैट? कई लोग हैं ऐसे, आई मीन आई यू कैन फाइंड देम। अभी सुबह इनको एक एग्जांपल दे रहा था, केले वाला है धर्मपुर में, उसे केले केले लेने गया पहली बार, क्या भाव है? 40 रुपए डजन, 20 रुपए 6 केले उसने, मैंने कहा दे दो आधा डजन, 6 केले काटे, दिया, एक और दे दिया। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, ये क्यों दे रहे हो? तो कहा इसके सब पैसे नहीं लगेंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा ये नहीं कह रहा हूँ पैसे नहीं लगेंगे, दिए क्यों तुमने मुझे, एक एक्स्ट्रा क्यों दिया? कहा साहब क्या पता जाने अनजाने कोई केला खराब निकल जाए, तो आपको तो लगेगा कि मेरे को 20 में 5 ही मिले, तो मैं तो डजन में भी एक दे देता हूँ और 6 में भी एक देता हूँ, सिर्फ आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, ये तो मेरा नियम है। अब केले वाला कौन सा साहूकार है, कौन सा महल बनाएगा? उसके लिए देखो ना नॉन नेगोशिएबल क्या है, कोई उसको बेईमान समझ ले, उसके लिए नॉन नेगोशिएबल है, छोटा छोटा आदमी है। सो ये प्रैक्टिस है भाई, वो प्रैक्टिस कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं। सर मेरे को एक ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर ये कहते हैं कि जब उस समय जो कांग्रेस की कमेटी थी जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करने वाली थी, तो उसमें 14 मेंबर थे। तो 14 मेंबर में से 13 मेंबर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया, और एक मेंबर ने आचार्य कृपलानी थे, पंडित जी को कहा, हाँ, हैं नेहरू का नाम, पंडित नेहरू को तो थे ही एक भी वोट नहीं मिला, ऐसा मैंने पढ़ा था हम्म, कि एक आदमी ने, जो आचार्य कृपलानी थे, उन्होंने खुद के लिए शायद वो वोट दिया था। नेहरू डिड नॉट गेट ए सिंगल वोट। इवन देन गांधी जी ओवर रूल्ड ऑल, एंड मतलब गांधी जी ने कह दिया कि भाई नहीं, मेरे को तो नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने से देश में मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने सारे नुकसान हुए हैं। तो गांधी जी की क्या थिंकिंग थी कि उन्होंने जिस आदमी की इतनी पॉपुलैरिटी थी, 14 में से 13 आदमियों ने सरदार वल्लभ भाई को चुना, और सरदार वल्लभ भाई एकदम मतलब ग्रास रूट के आदमी थे, तो गांधी जी को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से मालूम था, गांधी से ज्यादा तो और किसी को पता ही नहीं था वल्लभ भाई के बारे में। फिर भी उन्होंने वल्लभ भाई को ओवर रूल करके और वल्लभ भाई को परसुएट कर दिया। वल्लभ भाई को बोला कि नहीं, तुमको इसमें से विड्रॉ कर लो और नेहरू को बनने दो। और सरदार वल्लभ भाई ने, मतलब गांधी जी को इतना रिस्पेक्ट था कि ही विड्रू, कि भाई ठीक है नेहरू को होने दो। एंड फिर नेहरू जी के अंडर में उनको बनाया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पर फिर भी कंटिन्यूअसली मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन चलते ही रहता था। दे कुड नेवर वर्क हार्मोनियसली एज अ टीम। तो मैंने सोचा शायद आपकी इतनी स्टडी है, मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी रही है जानने के लिए कि गांधी जी जैसा आदमी जो पब्लिक व्यूज को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, जो सत्य और उसको इतना मानते थे, वो कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को नेहरू को प्रीफर करना है ओवर वल्लभ भाई पटेल। मतलब जो जो आदमी ट्रुथ को इतना मानने वाला था, उन्होंने कैसे ये डिसीजन लिया? आई हैव नेवर बीन एबल टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो इस बात को आप कह रहे हैं भाई, आप सही कह रहे हैं, मतलब ये इस बात का जवाब वैसे किसी के पास नहीं है, पर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी, और गांधी का ये नियम, ये जो डिसीजन था, ये एक तरह से प्रैग्मेटिक भी था। उसकी प्रैग्मेटिज्म में 2-3 बातें थी। एक, गांधी सरदार पटेल का इलाज कर रहे थे, नेचुरोपैथ तो थे ही वो, और उन्हें पता था, नहीं, गांधी जो है सरदार पटेल का इलाज कर रहे थे। सरदार पटेल बीमार चल रहे थे, और सरदार पटेल का आयुष्य बहुत नहीं था, गांधी जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे। तो इसीलिए पहली बार अगर राष्ट्र स्वराज ले रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उम्र में इतना युवा हो कि कम से कम 10-15 साल तक इसको बैलेंस कर सके। तो उस समय युवा वर्ग, उस समय की
वर्किंग कमेटी में, युवा वर्ग में, और सबसे पॉपुलर पंडित जवाहरलाल था। एक जवाहरलाल था, जवाहरलाल पॉपुलर था वर्किंग कमेटी में, भले उसको वोट एक भी नहीं मिला पर पब्लिक में वो पॉपुलर था। तो गांधी का एक डिसीजन तो ये था, मुख्य बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि नेहरू की दुनिया से जो संबंध है और देशों से जो संबंध है, उनमें सरदार पटेल का अपना एक्सपोजर कम था। और जब आप मुक्त हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, तो आपको पूरी दुनिया से आपको कुछ रिलेशनशिप कायम करने चाहिए थे। इसीलिए दूसरा फैक्टर था जहां उन्होंने कहा कि नेहरू वुड बी ए बेटर कैंडिडेट। और तीसरी और मुख्य बात ये भी थी, ये भी हमको समझना तो पड़ेगा ही, कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में गांधी को सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा होगा, इसको हम रूल आउट नहीं करते हैं, इस मुद्दे को हम रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जितना जवाहर को मैं जानता हूं, ये बातें हुई थी पर कभी पब्लिक में नहीं आई, और ऑब्वियसली इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। ये तो जो उस समय लोग थे करीब में, उनसे बातचीत से ही ये पता चल सकता है। गांधी को पता था कि जवाहर खुराफाती है, स्पष्ट बता देता हूं आपको, जानता था कि खुराफाती है। पटेल को बनाऊंगा तो जवाहर खुराफात करेगा, उसके अंडर में काम नहीं करेगा। पर सरदार के लिए उनको खातरी थी कि वो नेहरू के अंडर में काम करेगा। बड़ा प्रैग्मेटिक निर्णय था। आप जरूर ये कह सकते हैं, आप जरूर ये कह सकते हैं कि 3 साल तो 3 साल, 4 साल तो 4 साल, और हम सब जानते हैं कि 1950 के दिसंबर में जो है सरदार पटेल की मौत हो गई। तब तक हम इस देश का उनको क्यों हवाला नहीं दिए? दे सकते थे, हाइपोथेटिकल है, जरूर दे सकते थे। वो 2.5 साल के बाद नेहरू उस पे आ जाते, पर उन 2.5 सालों में नेहरू क्या करता, किसे पता? देश की क्या स्थिति होती, किसे पता? तो इन सारी बातों को जब मद्देनजर रखते हैं, तब हमारे लिए तो हाइंडसाइट में हम कुछ बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ना आप थे ना मैं था। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी की जजमेंट में एरर भी हो सकती है, आफ्टर ऑल ये तो हो ही सकता है ना। पर इस बात को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं मैं महसूस करता हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होते हुए भी नेहरू ने इंटीग्रेशन में पूरा हवाला सरदार पटेल को कॉन्फिडेंटली सौंप दिया था। इसमें कोई बीच में उसने सिर्फ कश्मीर को छोड़ करके, कश्मीर तो अभी भी सिरदर्द बना हुआ है, वो अलग बात है। सरदार पटेल इस पक्ष में नहीं था कि उसको यूएन में मामला भेजा जाए, नेहरू को उसने कहा। पर नेहरू जो है वो पंचशील वाला आदमी था, आदर्शवादी था, तो चाहता था कि मैं सबसे अच्छा भाव रखूं। चीन में भी धोखा खाया, उसमें भी सरदार पटेल की चिट्ठी बड़ी मार्के की है कि आप चीन पर विश्वास कर रहे हैं, बड़ा गलत विश्वास कर रहे हैं, दगा देगा चीन। गांधी को धोखा देने वाले 2 अनफॉर्चुनेटली हमारे मद्रासी थे, क्या कहूं। एक पाणिग्रही था जो चीन में एम्बेसडर था, और दूसरा यूके में एम्बेसडर था, जिसने सबसे लंबा भाषण यूके यूएनओ में दिया है, 3 दिन कंटिन्यूअस। नहीं, कृष्ण मेनन। तो गांधी ने, नेहरू ने धोखा खाया है, ऐसा नहीं है कि उसने धोखा नहीं खाया है। पर अब ये लंबी डिबेट हो जाएगी, पॉलिटिकल डिबेट है, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट लीनिंग वाले थे, और नेहरू खुद भी कहीं लेफ्ट लीनिंग वाला था, और सरदार पटेल लेफ्ट लीनिंग वाला नहीं था। तो ये सब बातें अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, और ये जरूरी नहीं है, जजमेंटल एरर जरूर हुआ, पर गांधी प्रैग्मेटिकली बड़े ठोस तरीके से सोच रहा था कि इसको मार्गदर्शन देश को। चौथी महत्व की बात, नेहरू की एक और क्वालिटी थी, अभी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, अनपैरेलली नेहरू वो सेकुलर, वो मुसलमान को बख्शेगा न हिंदू को बख्शेगा। हमने चला दिया आजकल बात कि नेहरू मुसलमान था, अभी तो कह रहे हैं गांधी भी मुसलमान था, उसकी मां मुसलमान थी। क्या किसका मुंह बांधने जाओगे? वो अलग बात है कि प्रणामी संप्रदाय वाकई में था, आज भी हमारे मौले सलाम गरासिया अभी भी गुजरात में आपको मिलेंगे, जो राजपूत थे मुसलमान हो गए, सारी प्रैक्टिस 16 संस्कार फॉलो करते हैं। अब क्या हुआ उससे? तो कोई 16 संस्कार फॉलो करने वाला हिंदू मुसलमान हो गया क्या? कि ये मौले सलाम मुसलमान है तो बाकी मुसलमान हो गए? नहीं होंगे, तो बकवास सब चलेगी, नहीं करना चाहिए सब। पर अब तो अगर
टंटा फिसाद खड़ा ही करना है तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, ये अलग बात है। पर अदरवाइज मैं आपको कहूं कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस हम सब परिस्थितियों के अधीन है, उस परिस्थिति crisis of character, you were also in that national conclave of MLAs. How do you foresee today, coming back to today, how do you foresee the world will evolve? I mean, one other thought that comes to my mind is crisis of character was always there. Today, probably there is a lot of noise, social media, news media, all of that keeps amplifying that. But वो राजा महाराजा के टाइम पे अय्याशी वो भी होती थी. So crisis of character was always there in the world. But now, how do we move from here? I mean, both you are an economist, so from an economic point of view and political point of view, and of course, moral point of view as well. See, the point I made was that we were quite vocal in practicing individual regulations in our culture. हमारे अपने परिवारों में जो है वो नीति की शिक्षा जो है वो घर पे भी दी जाती थी, बंद हो गई। बच्चे आजकल विद्रोह कर रहे हैं, नई पीढ़ी विद्रोह कर रही है, और नए माँ बाप तो उनको कुछ पता ही नहीं है, खुद ही नहीं पता बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये मूल प्रश्न शिक्षा का है। एक गांधी ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको ये समझ में आया कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। आप दुनिया में कोई पॉलिटिशियन दिखा दीजिए जिसने पब्लिक लाइफ में प्रवेश किया और 5 साल के अंदर जो यूनिवर्सिटी खोल दी हो। आप इसकी किन किन बातों को देखेंगे। 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कर दी, केजी से लेके पीजी तक। क्यों? मुझे जो नया समाज बनाना है उसकी तैयारी कहाँ होगी नई पीढ़ी में। तो हमारी जवाबदारी तो भी है ही, ठीक है। एक हो गई नीति, और दूसरी हो गई राजनीति, और तीसरी हो गई अर्थनीति। अर्थनीति और राजनीति मिलकर के अपने नीतियों में परिवर्तन करेंगे, और जितना आप ट्रांसपेरेंट होंगे और जितने आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो आप सिस्टम के लेवल पर तो इफेक्ट कर ही सकते हैं। आप मेजॉरिटी लेकर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए तो हम जवाबदार हैं। हम किसको चुन के भेजेंगे? हमारे पास है मौका। अगर हम उसका असेसमेंट ऐसा कर रहे हैं तो करना चाहिए। तो राजनीति में फर्क होगा। अर्थनीति को लेकर के बड़ी कष्ट है। अर्थनीति को लेकर के कष्ट ये है कि हम बहुत सारे निर्णय अब ले नहीं पाएंगे जो हम पहले ले सकते थे। अब हम फंस गए हैं। तो अब उससे निकलने का तरीका एक ही है कि हम लोगों ने फोकस प्रोडक्शन पे किया है, कंजम्पशन पे नहीं किया है। प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं है, कंजम्पशन पे तो है। आप एग्रीगेट डिमांड करके आपको जीडीपी बढ़ानी है, तो एग्रीगेट डिमांड कब तक बढ़ाओगे? ये तो हाइप है। आपको थियरी बता दूं कि 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के अंदर एक थियरी ऑफ ऑब्सोलिसेंस आई। आपको पता है जो बल्ब जल रहा है उसकी लाइफ कितनी थी? ओरिजिनली जब साइंटिस्ट ने इसको बनाया 10,000 आवर्स। कॉन्क्लेव हुआ कि कौन करेगा इसका प्रोडक्शन। एक बार बल्ब ले गए पूरी जिंदगी चलेगा। मार्केट कहां से? तो कहना है 100 ईयर्स कर दो, 100 आवर्स कर दो, और बाद में कोई बल्ब 100 आवर्स से ज्यादा नहीं चलता, फिलिप्स वाला भी। ये ऐसा नहीं है कि यहां कोई गड़बड़ नहीं होती है। ग्रेट डिप्रेशन में थियरी ऑफ ऑब्सोलिसेंस आई। बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग बैठे कॉर्पोरेट के, उन्होंने कहा यूज एंड थ्रो की इकोनॉमी खड़ी करो, नहीं तो हम ये डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे। The Great Depression, it's not only the fair deal policy of America which brought us out of depression in America, but it was also the consumerist theory which was pushed. So we still have control, and our culture has it. मोटा पहनो, मोटा ओढ़ो, मोटा खाओ। कहां से आई बात? थोड़े में गुजारा होता है। कहां से आई बात? ये सारी वैल्यूज हमारी थी। तो ये वैल्यूज तो वापस ला सकते हैं, अपने बिहेवियर में ला सकते हैं। तो कंज्यूमर साइड से अगर अप्रोच करोगे तो अर्थनीति अपने आप ठीक हो जाएगी। आफ्टर ऑल मार्केट कैप्चर सिग्नल्स, इसमें तो मैं भी बिलीव करता हूं। मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। क्योंकि हम तो बच्चों को पढ़ा देते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर गिवन। मजा है आपको? गलत, झूठ बोलते हैं हम।
सुबह से लेकर के रात तक टीवी वाले हमको समझाते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दिखने वाली महिलाएं और स्मार्ट पुरुष हमको ये बता रहते हैं कि हमको कौन से टूथपेस्ट से, कौन से टूथब्रश से दिन शुरू करना चाहिए और कौन सी नाइटी से और पजामे से अपनी दिन खत्म करना चाहिए दिन भर के लिए, और आपको किस घर में रहना चाहिए, उसमें हवा कहाँ से आनी चाहिए, उसमें पानी कहाँ से शुद्ध आना चाहिए, आपको हर घड़ी बताते रहते हैं। और आप ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो फ्री है, वैल्यू फ्री है। इतना बड़ा झूठ कभी सुना है? नहीं सुना। तो हम उसके गुलाम हैं अभी। तो अर्थनीति तो अपने व्यवहार से बदलेगी। कंज्यूमर कैन चेंज द मार्केट्स, प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज से भैया डिमांड है, हम क्या करें, हम तो प्रोड्यूस करेंगे। ये बात है। अभी तो मौका है सर आपको पूछने का तो। सर ये बहुत बार देश विभाजन की बातें होती है, जो विभाजन हुआ उसके बारे में आधी अधूरी चीजें हमें मालूम है, ओके भी वो पर्पस कहीं सर्व हुआ ऐसा लगता नहीं है 75 इयर्स के बाद। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे सर उस पर? लंबी बात हो जाएगी थोड़ी तो कृष्णकांत बताइए जी। सर। नहीं, मैं बता दूं आपको, क्योंकि लोग गांधी जी को ब्लेम करते नहीं हैं उसके गांधी लिए। जी सुनी नहीं। आपको पता है 15 अगस्त को गांधी कहां था? कलकत्ता थे वो वहां पे। बराबर। हाँ। किसी ने सवाल किया कि बुड्ढा वहां क्या कर रहा है? मतलब राइट्स हुए थे और नहीं नहीं, वो उपवास कर छोड़ो रहे थे। बात, ये नहीं मैं कह रहा। जिस आदमी ने अपना तन मन धन लगा करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, जिसको सुभाष बाबू ने फादर ऑफ द नेशन कह दिया, वो फादर ऑफ द नेशन झंडा फहराने के लिए हाजिर नहीं है, तो किसी से उसने पूछा, किसी ने, कि भैया ये झंडा नहीं फहरेगा या नहीं आओगे? तो पूछा किसी ने? तो कौन पूछ रहा था गांधी को? गांधी कह रहा था कि इसमें मेरा अरुण्य रुदन है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या करना है। ये सब अपना हाथ कटवा के आए थे। जिन्ना जी ने जो है ऐसे फंसाया था कि, और माउंटबेटन इतना होशियार था कि उसने ऑलरेडी करार कर लिया था। बाद में बापू को बुलाया कि बापू ये फैसला हो गया है, अब आप कुछ कहिए। तो बापू ने कहा कि अब क्या कहूं मैं, सरदार और नेहरू ही मेरे कहने में नहीं है, तो मैं क्या कहूं। अब करते रहिए ब्लेम किसी पर, तो आपको ठीकरा फोड़ना है तो अच्छा है, गांधी पे फोड़ दिया, क्योंकि गांधी तो अखंड भारत की बात कर रहा था। ये बात है। So he was not agreed. He was not consulted. For my dead body, no partition. वो तो उसने पहले से कहा था, और वो अगर ज्यादा जिंदा रहता तो वो नोआखली और बिहार और बंगाल के बाद पाकिस्तान जाने वाला था। वो तो चाहता था, वो अगर जिंदा रहता और पाकिस्तान चला जाता तो, आई मीन हाइपोथेटिकल है, पर दोनों ने, प्रजा ने तय कर लिया होता कि ये गलत निर्णय लिया गया है, चलो हम फिर साथ में रहते हैं, ये तब हो सकता था। पर वो तो इसका कायल ही नहीं था, नहीं करेगा। व्हाई वुड ही आस्क फॉर पार्टीशन? बट ही वाज नॉट कंसल्टेड व्हेन द डिसीजन वाज मेड। थक गए थे भाई, नेहरू थक गया था। ये नहीं बुड्ढा थका था, क्योंकि इसके लिए स्वराज नहीं था ना, उसके लिए तो स्वराज ही अलग चीज थी। उसने कहा ये क्या है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम है तुम्हारी, मेरे देश के लिए मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम अकेली नहीं चाहिए। ही कुड वेट। 42 के करो या मरो के बाद सब गिरफ्तारी से जब बाहर आए, तब सब बुढ़े हो गए थे, सब थक गए थे। अब कहा कि नजर में है सत्ता, ले लो जो मिल रहा है ले लो, पार्टीशन ले लो, कर दो, दे दो। बुड्ढे को थोड़ी बनना था प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, चला गया वो आग बुझाने के लिए। ये बात है। सो वी आर ब्लेमिंग हिम टोटली बेसलेसली, कोई बेस नहीं है इसका, ये तो पक्की बात है। नहीं आपने कह दी तो पक्की, बाकी मुझे नहीं पता था सर। आज बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, चलाएंगे भाई। अब ये तो आप आयोजकों से पूछ लीजिए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। आयोजक खुश है आप जब तक यहाँ बैठोगे। सर ये पार्टीशन तो बेसिकली रिलीजियस लाइंस पे हुआ। अगेन एवरी रिलीजन एज यू राइटली सेड emerged under certain circumstances. Everybody had a truth with small t. And I find that Islam emerged in a land which was full of violence. That was a very harsh terrain.
and probably it kind of propagated कि you can marry 4 women when people were marrying 40 women probably. So it was trying to control them. While it tried to mellow down the tribes, the tribal instinct has overtaken that religion. And I also find that I had read one book by one Dayabhai Nagrik, who actually changed his last name to Nagrik, because he didn't want to be carrying any identity, Ukar to Upkhand, where the entire Asian continent, barring Japan, Australia, are not really part of Asia. It was not a single functional democracy. Even today, probably hardly there are few functional democracy, and India has in a way survived. So probably partition in a way helped India to survive. Otherwise, who knows how this whole thing would have. But mainly around this Islam, because it's not just in India, everywhere else there is that concern, and probably people who try to be politically correct don't talk about it. How do you see that religion coming under some kind of a mellow down, or trying to come up to that sarva dharma bhav? I don't see that as a solution, because that religion by itself is very violent, and they have this concept of not kind of having any other religion coexist with them. It's a very difficult question, and I don't think that we should be judgmental about it, because the practice of Islam, actually the practice of the word Musalman, is very pious. Same thing as we study in Hindu Dharma, where we are talking about self-regulation. Paigambar's basic message was this self-regulation, bringing regulation into this anarchy of a kind which was a violent anarchy. 4 wives, 40 wives, ये सब कहानियां हैं. आपको हिंदू कम्युनिटीज में बहुत सारी कम्युनिटियां मिलेगी जहां पॉलीगेमी इज सो कॉमन. आइए मेरे इलाके में, आदिवासी इलाके में, 2nd, 3rd वाइफ तो आपको कॉमन मिल जाएगी. ठीक है, ये तो डेमोग्राफी है, ये डेमोग्राफी है. नहीं, वो मैं कह रहा हूं, मतलब उसके लिए यू विल से कि भाई मुसलमान जो है वो 4 शादियां कर लेगा, तो आप जेंडर इक्विटी देख लो, जेंडर बैलेंस देख लो, डेमोग्राफी में देख लो कि भाई इतनी औरतें हैं कहाँ. हर एक मुसलमान अगर 4 शादी करेगा तो लड़कियां ही नहीं रहेंगी. ये भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रैक्टिकली. तो ये ठीक है, अगर उसका धर्म इजाजत दे रहा है वो अलग बात है, उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसमें हम दखल अंदाजी करें ना करें, इसका झगड़ा जो है हम पर्सनल लॉ में कर लेंगे. पर्सनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में स्टेट को क्लियर होना चाहिए. सीधी बात है. मैंने ऐसे ही मजाक, मतलब पासिंग में कहा ना, हज की सब्सिडी नहीं देनी चाहिए. नहीं देनी चाहिए. क्यों भाई, मैं तुम्हारे अपने धर्म के पालन के लिए, जाओ तुमको जहां जाना है. नहीं देनी चाहिए. उसी हिसाब से शाहबानो केस था, गलती हुई. तुम्हारी पर्सनल लॉ क्यों, औरत गड़बड़ में है, उसको तुम संभालो, जो तुम्हारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वल राइट से दे दो. गलती हुई और ये गलत है, इस निर्णय को बदलना चाहिए. द स्टेट हैज टू बी फर्म, दैट्स ऑल. So if the state is going to be acting with the constitution in this part of the world, in India, Islam is not a threat. ये हो गया इंटरनल. और हम तो मुसलमानों के साथ रहते आए हैं. आम मुसलमान तो किसी को तलवार लेके मारने जाता नहीं है. डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इस धरती के लिए कहता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. ये इस धरती के लिए कह सकता है. इस धरती की टॉलरेंस आप देखिए कि उसने मुसलमानों को भी सॉफ्ट कर दिया. यहाँ के मुसलमान सॉफ्ट हैं. हाँ, ये देखिएगा. अब वो अगर उग्र हुए हैं तो कुछ और अलग कारण है. उग्रता जब भी आ रही है, एग्रेशन आ रहा है, तो दैट देयर आर रीजंस फॉर इट. नो जस्टिफिकेशन. द स्टेट हैज टू बी फेयर to any kind of religious aggression which is shown up. All right, so we should be able to solve this in a democracy through that. I would not like to pinpoint and say that this religion is the most violent. Then I will have to also tell you that Christianity is also equally violent. नहीं, हिस्ट्री जो है, जिहाद जो है, वो रियल जिहाद, क्रूसेड,
crusade is not between any two other religions. It's between Christianity and Islam for the supremacy over the geography. It's their problem. तो आप क्या कहेंगे कि यूरोपियन कम कबील वाले थे, कबाइल थे वो भी सब? आज भी कोई कबाइलियत गई नहीं है, आपको पता नहीं है? आप जानते हैं? आप तो ऑस्ट्रेलिया कैसे बसा है, अमेरिका कैसे बसा है, क्या किया इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ? हिंदुस्तान में कभी देखा? हमारी अरण्य संस्कृति की हमने पूजा की, हमने आदिवासियों को मार नहीं दिया, आर्यों ने आकर के आदिवासियों को नहीं मारा, उन्होंने आकर के देखा रही तो गजब का देश है, यहां पर सब मिलजुल के रहते हैं। अरे आदिवासी इसी पार्ट में सर्वाइव हुए भाई, और कहाँ हैं? क्यों हुए हैं? क्योंकि इस देश की मिट्टी है, हम सब साथ में। कैन यू पॉइंट आउट अ लैंड वेयर 3 religions are born? Hinduism, Jainism, Buddhism, and 5 religions, sorry, 4th, Sikhism, and 4 religions have come from outside and merged. Islam, Parsis, Baha'is, Jews. आए हैं, रह गए यहाँ पर। तो I think that if political interference starts, if the state through the politics starts interfering in religious matters, then of course there is aggression of different kinds. ठीक है, ये इश्यू है हमारे लिए, और ये इश्यू उतना ही है जितना अपीजमेंट से होता है। अगर भाई रिकॉर्डिंग अगर बंद करना है कर दो, और लिखना है तो मुझे कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, कांग्रेस हैज फॉलोड अपीजमेंट पॉलिसी, एडमिट इट। क्या बुरा है? अभी कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं है,